Good afternoon, everyone. So today we are going to start with paper 2 corporate and other laws, wherein we are going to discuss everything in detail about corporate and other laws and ये एक हिंदी प्लस इंग्लिश बैच होने वाला है, तो हाँ हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे चीजें, हम हिंदी में भी एग्जांपल्स लेंगे और हिंदी में भी समझेंगे अबाउट द सेक्शंस. Okay, so we have two of you here and a few more students would join in a few more days. So today's session, let me just give you a gist of what we are going to cover up today and what are the things we are going to learn today. So since today is the first class, आज हम लोग basics पे ज़्यादा ध्यान देंगे. Probably something जो आपने foundation में भी पढ़ा है और basically एक recap session होगा as to we'll first understand कि आपके paper 2 में क्या-क्या चीजें cover है. उसके बाद में थोड़ा सा law का basics समझेंगे और and after that post which we will start with a few basic definitions. ठीक है, तो आज का सेशन बेसिक सेशन होने वाला है जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपके पेपर 2 में क्या क्या चीजें कवर्ड है और उसके अलावा और क्या क्या नई चीजें आप सीखने वाले हो. ओके, सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ CA इंटरमीडिएट and with your paper 2 that is law? Are you all ready? Excited? कुछ नया सीखने को मिलेगा. Okay, so and one more thing before I start, if you all are not responding, अगर आप लोग मेरे questions का आंसर नहीं कर रहे हो तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. So let it become a participative session. Participative होना चाहिए session. So whenever I am asking a question, please do answer. It is okay even if you're in a dilemma whether I am right or wrong. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जो भी आपके मन में आए आप आंसर कर सकते हो. इट्स इम्पोर्टेंट टू आंसर देन जस्ट सिटिंग क्वाइट इन द क्लास. नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग एक्चुअली भी सुन रहे हो या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Let me just walk you through a few basic things about what your subject is and what are the things we are going to cover, and also how are we going to cover different things. Okay, so law is your paper 2. The name of the subject is Corporate and Other Laws. Now, talking of corporate and other laws, में आप क्या-क्या चीजें सीखने वाले हो? What are the topics which we are going to cover here in corporate and other laws? ठीक है? So जैसे the name itself suggests, इसके दो parts है. First one is corporate law. आई एम श्योर जैसे ही मैंने कॉर्पोरेट लॉ बोला आप सबके दिमाग में कंपनी लॉ आ गया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. Okay, and the second part, other laws. ठीक है, so the subject is divided into two parts, corporate law and other law. अभी एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के दिमाग में कि मैम is there a distinction of marks as well corporate law के लिए और other laws के लिए? आंसर is yes है. so corporate law होगा 60 मार्क्स का और other laws जो होंगे वो होंगे 40 मार्क्स के. अभी आप इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाले हो इन corporate law and other laws? so corporate law में the Companies Act 2013 is what we are going to cover. Okay, so corporate law में हम लोग सीखेंगे the Companies Act 2013. And talking of other laws, क्या क्या चीजें हैं जो हम other laws में cover करने वाले हैं? So other laws will basically consist of first one, आप सबका foundation का सबसे
easy topic या for that matter सबसे favorite topic कौन सा था? Okay, let me ask you a question. So, which topic was your favorite when you were doing the foundation? Was it Contract Act, Sale of Goods Act, Companies Act? कौन सा topic आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? कौन सा topic? Which topic was your go-to topic when you were doing foundation? Okay, so Contract Act. Okay. So I guess Contract Act इसलिए भी easy लगता होगा या आप लोगों का favorite होगा because it was something which you could relate to. The examples we take for Contract Act are generally something जो आप लोग daily life में experience करते हो. So इसलिए I guess Contract Act is something which everyone likes. So yes, यहाँ पे भी हम Contract Act पढ़ने वाले हैं. So we have the Indian Contract Act here as well. But यहाँ पे कुछ और पढ़ेंगे Contract Act. So at your foundation level, the sections which you covered in Contract Act were section 1 to 75, right? अगर याद होगा, foundation की memories अगर fresh होंगे दिमाग में, so you would remember that you've completed section 1 to section 75 at your foundation level. Now talking of what are we going to study at intermediate level? So let me make it very clear that section 1 to 75 तो नहीं है intermediate का part. It is not a part of your syllabus for CA Inter. But yes, you will have to know the basics of Indian Contract Act and only then you will understand what we are going to study intermediate level पे. तो basics के बिना कुछ नहीं होता, right? So यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हो वो होगा start section 124 से. अभी सेक्शन 76 से सेक्शन 123 कहाँ गया? वेयर आर दोज सेक्शंस? सो वो सारे सेक्शंस जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे वर रिमूव्ड एंड अ सेपरेट एक्ट वाज मेड. कैन समवन टेल मी व्हिच एक्ट वाज इट? एनी आइडिया कौन सा एक्ट था वो जिस जहां से मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस निकाल के वो एक्ट बनाया गया है? कौन सा एक्ट था? बेसिक है ये एंड आई होप आप लोगों को पता हो. अगर नहीं पता है तो यू कैन राइट डोंट नो एज वेल, नो प्रॉब्लम. Yes, do you know it? With where did these sections 76 to 123 go from the Contract Act? Okay, so Abhi says don't know. Okay, so ठीक है, मैं खुद ही आंसर कर देती हूँ. See, the reason I'm asking questions to you is so that आप लोगों का level of understanding भी मुझे समझ में आए and we'll move at a really slow pace right now since we are starting it today. But as and when we progress, and if you're not answering to things, you will not be able to understand things. So it is very important कि जब मैं आपसे कोई question पूछ रही हूँ, कोई मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, तो आप उसका respond कीजिए. It will only enhance your level of understanding. देखो मुझे तो एग्जाम नहीं देना है, मेरा एग्जाम हो चुका है, एग्जाम देने जाना है आप लोगों को. So बेटर होगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट करो और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कीजिए. सो वो जो सेक्शन है 76 टू 123 वो गए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. यस, सोगा बना है. सो पहले the sections dealt with the provisions of Sale of Goods Act, but later on these sections were removed from the Contract Act and a separate act, that is Sale of Goods Act, was made. Now moving on to what are the other topics which we are going to cover at your intermediate level.
The next topic is the Negotiable Instruments Act. (1881). So Negotiable Instruments Act, I'm sure आप लोगों ने accounts में bills of exchange, promissory notes इन सब के बारे में पढ़ा है, right? So Negotiable Instruments Act में हम उन्हीं से related provisions पढ़ने वाले हैं, provisions with regard to bills of exchange, promissory notes, checks, and all the negotiable instruments which are in place. The next act is the General Clauses Act. General Clauses Act is basically a basic or a general act which basically gives us the provisions wherein कोई एक्ट में कोई अगर टर्म यूज हो रहा है और उसका डेफिनेशन एक्ट में नहीं दिया, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके, कंपनीज एक्ट में से एक टर्म यूज किया है डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट द टर्म डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो फिर अभी डॉक्यूमेंट का मीनिंग हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट अ डॉक्यूमेंट मीन्स? सो वो जो टर्म डॉक्यूमेंट है वो ना जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है और हम वो वाला मीनिंग लेंगे इन ऑर्डर टू असर्टेन कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है. So General Clauses Act gives us the basic or rather the general rules of interpretation कि एक पर्टिकुलर एक्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, किसी बेसिक डेफिनेशंस दिए हुए हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में, and if a particular act does not contain the definition of those terms, so we'll go to the general clauses act and then we'll look at the definition and meaning of those terms there. And finally, the last thing which we are going to study here is interpretation of statutes. Interpretation of statutes basically is where we will study the several rules of interpretation, interpret कैसे करते हैं provisions को, different rules of interpretation क्या है, और and we are also going to understand the meaning of different terms which are used, such as notwithstanding, without prejudice to, ऐसे बहुत सारे words use होते हैं ना law में, तो हम उन सब का meaning जानेंगे कि क्या है इनका मतलब, what it means, and what meaning they give. So these are the things which we are going to study for your CA Intermediate Paper 2, Corporate and Other Laws. So I hope you all are clear with this. ये समझ में आया? Okay, just give me a minute. There's some technical glitch. तो are you all clear सब्जेक्ट में क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Okay.
So this was basically about what are the things we are going to cover आपके CA इंटर का syllabus क्या है. Now talking of questions का या फिर paper का pattern कैसा होगा, what will be your paper pattern. So your paper would be both descriptive as well as objective type. हाँ, yes, you have objectives as well. So 70 marks, 100 marks का total paper है. 100 marks में से 70 marks जो है that will be for your question answers, matlab descriptive paper, and the remaining 30 marks would be MCQs. So the paper is divided into two parts, descriptive as well as multiple choice questions. 30 marks of MCQs and 70 marks would be your basic descriptive question and answers. Now talking of MCQs, जो normal question होता है, let me answer the basic questions which would have, and then I'll take questions from you in case you have any. Talking of MCQs, MCQs could be direct questions or case study based MCQs. So there, it is not so कि MCQs है तो सीधे सीधे straight forward questions आएंगे MCQs में, ऐसा नहीं होगा. MCQs भी case study based हो सकते हैं, and not only that, MCQs के MCQs में there is no negative marking as such, so there is no negative marking, no need to worry. नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हैं ना हम लोग, फाउंडेशन में पेपर 3 और पेपर 4 में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो सो नो नीड टू वरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर. यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. हाँ, बट एमसीक्यू के लिए यू विल हैव अ सेपरेट ओएमआर शीट व्हिच यू विल हैव टू फिल इन, एंड फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इट्स नॉर्मल, जैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वैसा होता है. नाउ let me ask you a few questions or basic समझते हैं law का. So today's session would be a total basic session only, wherein we'll brush up a few concepts which you have already studied at your foundation level and start with definitions. Okay. Now talking of what is the subject you're studying law. So सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है, what is law and why is it important? So what is law and why is it important? आप लोगों को आंसर करना है. You have only 1 minute to give your answer. So now, from now on, I'll set a time limit for you to give me your answers. अगर उतने टाइम लिमिट में कोई आंसर नहीं आता तो टाइम अप हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम अप होने के बाद मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. I'll ask the question in a different manner then. Quick. What is law and why is it important? Rules. Okay. What kind of rules? एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे क्या? एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ ऐड करना है? See, I understand when there are so many people, you shy away from answering, but अभी आप लोग आंसर कर सकते हो. There are not many people, no? Okay. So talking of what is law and why is it important? Law क्या है और उसकी जरूरत क्यों है? अभी let's understand this with help of an example. ठीक है? I'm sure you all must have heard of dowry cases, and many cases wherein people have suffered a lot because of these cases, dowry के cases. So एक problem था इंडिया में which was related to dowry.
अभी ये जो प्रॉब्लम था, इसकी वजह से काफी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है. पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वर सेवरल डिफरेंट थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड. नाउ in order to curb this, in order to punish people who are involved in these kind of offenses, एक एक्ट बना, एक रूल बना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने फॉर डाउरी प्रोहिबिशन. सो एक एक्ट बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. और लेट्स से फॉर एग्जांपल you are driving. I'm sure you must enjoy, you must be knowing how to drive. और ड्राइव करना इसी ड्राइव करना तो सबको पसंद आता है, राइट? नाउ आप ड्राइव कर रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है. सो यू आर राइडिंग अ बाइक एंड यू हैवंट worn योर हेलमेट. अभी जैसे ही आप सिग्नल क्रॉस करके गए, यू सी देयर आर अ बंच ऑफ ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग देयर आफ्टर द सिग्नल एंड वो सबको पकड़ रहे. अभी आपने तो हेलमेट पहना नहीं है. देयर इज नो स्कोप ऑफ टेकिंग अ यू टर्न एज वेल ऑन दैट रोड. आपको आगे से जाना ही है, पुलिस वालों के सामने से ही जाना पड़ेगा अगर आपको रोड आगे जाना है तो. तो अभी इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? यू विल गेट कॉट. पुलिस वाले अंकल आपको पकड़ने वाले हैं, हाँ या ना? Yes, but obvious, yes. They are going to catch hold of you because you're not wearing your helmet. Now, when they catch you, what will be the thing? What will happen? पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिसमैन, he has caught you because you were not wearing helmet. तो क्या होगा अभी आगे? What will happen when the traffic policeman he catches you not wearing the helmet? क्या होगा आगे? फाइन. ओके, फाइन लगेगा. सो क्यों लग रहा है फाइन यहाँ पे? अरे भाई, फाइन क्यों लगा? ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, फाइन क्यों लगा? Why do you think you were fined? Come on, this is not related to subject, this is basic. Helmet. Okay. Helmet. Okay, ठीक है. I guess I've understood what you want to say. So because आपने हेलमेट नहीं पहना इसलिए आपको फाइन लगा. अगर आप हेलमेट पहनते तो आपको फाइन लगता नहीं लगता? सो ये वाले पावर्स किसने दिए हैं? इस ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं. और क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वी हैव टू फॉलो दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो व्हेन वी से व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, when we are talking of law is nothing but it is a set of rules and regulations. ठीक है. So law is nothing but a set of rules and regulations. And why is it important? अभी देखो, अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं बना होता या फिर से फॉर एग्जांपल देयर weren't any traffic rules at all in place, तो क्या होता? Everyone would jump red signal. अभी एक बाइक यहाँ से आई, एक बाइक यहाँ से आई, दोनों एक्सीडेंट हो गए. सब रेड सिग्नल जंप कर रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, किसी को कोई डर नहीं है किसी बात का, बिकॉज देयर इज नो रूल इन प्लेस. There will be a lot of chaos. There will be a lot of problems if there are no rules and regulations in place. बहुत ज्यादा problematic situation हो जाएगी. और क्योंकि बहुत ज्यादा problematic situation हो जाएगी, उसीलिए in order to systematize the behavior of people in a society, in order to maintain regulations, in order to maintain order, in order to regulate how people behave in a society, it is important for law to come up, for laws to be made. There is a need of rules and regulations. When I talk of rules and regulations, क्या हमारे घर में rules and regulations नहीं होते? हाँ, होते हैं. If you're going out, if you're stepping out of your home, आपको ये पूछा जाता है कि वापस कितने बजे आओगे, या for how long are you going to stay outside? Yes.
डेफिनेटली मुझसे अभी भी पूछा जाता है कि कितने देर में आएगी या कितने कितने टाइम में you'll come back. So there are rules and regulations at your home as well. There are rules and regulations at workplaces as well. तो जब हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री को रेगुलेट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का जरूरत है, राइट? So that's where law comes up, and that's why it is important. So law is nothing but a set of rules and regulations which govern the behavior of people in a society. Okay, so law is nothing but a set of rules and regulations which govern the behavior of people in a society. And talking of why is it important, it is important in order to maintain order and also in order to ensure that there are no chaos created because of no rules being in place. Okay, so this was the basic of what is law and why is it important. Law का जरूरत क्यों है हमें? में लॉ की जरूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन और गवर्न ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन अ सोसाइटी. अगर लॉ होता ही नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते. कोई फ्रॉड करके भाग जाता और उसको पनिश नहीं कर पाते. कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. अभी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, नाउ यू नो दैट यू हैव सर्टेन रेमेडीज व्हिच यू कैन टेक इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट इन केस अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही प्लेस पे नहीं होता, देन पीपल वुड कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट दे वुडंट हैव एनी रेमेडीज टू टेक अगेंस्ट पीपल हु आर कमिटिंग ब्रीच. ठीक है, तो जो सफरर होता, जो सफर करता बिकॉज ऑफ द ब्रीच, जो अग्रीव्ड पार्टी होता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इन ऑर्डर कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कैसे रिकवर करें अमाउंट या फिर what action do I take against the person wherein there's no law in place. But since there's a law in place, there are different options which the aggrieved party has. Okay, so this is what law means, and this is the importance of law in uh, in general. So clear with this? Have you all understood this? Yes. Okay, so we've now understood what is law and why is it important. अभी जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे इज कंपनीज एक्ट. विल स्टार्ट विथ द कंपनीज एक्ट. नाउ अभी बेसिक हमने समझ लिया है कि लॉ क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. अभी जब हम लॉ की बात कर ही रहे हैं तो लेट मी जस्ट आस्क यू, हाउ इज लॉ मेड? एनी आइडिया कि लॉ बनता कैसे? आप लोग फाउंडेशन में लॉ पढ़ के आए हो, राइट? you've studied basics of law at your foundation level, तो आप लोगों को इतना बेसिक तो पता ही है कि लॉ बनता कैसे. Yes or no? Or do you want me to explain that? I'll explain it to you in brief कि law बनता कैसे. So do you want me to explain? Okay, no idea. ठीक है, I will in short explain you how is law made. So पार्लियामेंट का नाम सुना है? पार्लियामेंट का I'm sure सुना होगा. तो ये जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. और एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Okay, so now whenever any law has to be made, say
नया कानून बनाना है तो क्या होता है, एक बिल बनता है. Bill here is not the normal invoice or not the bill which you get in a restaurant or when you shop. Bill here is basically a proposal or a draft law, or we also call it as a proposed law. ठीक है. सो ये बिल एक बिल बनता है. कौन बनाता है बिल? इट इज द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जिसके अंडर वो लॉ बन रहा है, वो लोग बनाते हैं. सो देयर आर लॉ मेकर्स, देयर आर एक्सपर्ट्स सिटिंग देयर, दे आर द वंस हु मेक लॉ, हु मेक बिल. सो देव मेड बिल. अब ये बिल जाता है टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पहले लोकसभा में गया. Now, Lok Sabha mein, you might have watched this on television if you ever got a chance to. लोक सभा की मीटिंग्स जो होती है, they are telecasted, and you see there are different members of parliament who are sitting there. They vote, they say they vote on a particular bill which is being introduced. And कभी कभार झगड़ते हुए भी देखा होगा आपने लोगों को in लोक सभा meetings. So लोक सभा में introduce हुआ bill that this is the proposed law which has to be made. अभी उसके बाद में ऑल द मेंबर्स, बेसिकली मेजॉरिटी मेंबर्स अगर लोकसभा की पास कर देता है बिल, वंस इट इज पास्ड इन लोकसभा, इट गोज टू द राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा में चला गया. अभी राज्यसभा भी वंस इट पासेस द बिल, this bill goes to the president of India. President of India gives the president of India will then have to give assent, that is confirmation. प्रेसिडेंट साइन करता है बिल पे, और वो बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है. एंड एक्ट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो अ बिल इज मेड. पहले कुछ भी फाइनलाइज होने से पहले देयर इज अ ड्राफ्ट व्हिच इज मेड. इवन व्हेन एन अग्रीमेंट इज मेड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड, पहले एक ड्राफ्ट बनता है. वो ड्राफ्ट में चेंजेस होते हैं और फिर बाद में वो फाइनलाइज होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है. पहले एक ड्राफ्ट बना है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं. सो डू यू थिंक एक बार में लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. सो लोकसभा राज्यसभा में देयर आर डिस्कशंस व्हिच हैपन. बिल वापस से लॉ मेकर्स के पास जाता है, वो लोग चेंजेस करते हैं, फिर वापस से बिल आता है यहाँ पे, एंड देन इट इज पास्ड. सो देयर आर चेंजेस व्हिच कीप हैपनिंग इन दैट. सो जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक उसमें चेंजेस होते रहते हैं. और फाइनल होने के बाद भी चेंजेस का स्कोप है. बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट्स, चेंजेस कीप हैपनिंग इन लॉ. नाउ, so a bill is made, it is passed in both the houses of parliament, receives the assent of the president of India, and that's where an act comes into existence. Okay, an act is something which we are going to study. But जब हम लोग ये बोलते हैं कि हम लॉ पढ़ने वाले हैं, तो लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट ही होता है क्या? नहीं, लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं होता है. लॉ मीन्स एक्ट प्लस द रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स होते हैं, हर एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं, हर एक्ट के साथ रूल्स बनाए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीड द कंपनीज एक्ट, सो देयर आर डिफरेंट रूल्स आल्सो व्हिच हैव बीन मेड. कंपनी रूल्स फॉर different purposes, auditors के rules अलग, directors से related rules अलग. So there are different rules which have been made. And not only rules, it also includes case laws. Now, what are case laws? I'm sure case law बोलते थे Salomon versus Salomon या फिर Balfour versus Balfour आप लोगों के दिमाग में आया होगा. So when we talk of case laws are nothing but decided cases wherein judgment has been given on a particular topic which was under debate. ठीक है, किसी चीज पे कुछ आर्ग्यूमेंट था या फिर कुछ प्रॉब्लम था, एंड दैट्स वेयर जजमेंट वाज गिवन. सो केस लॉज भी हम पढ़ेंगे. So when we talk of the word law, or whenever this term law is used, it includes act, rules, and case laws. Now when we talk of this word act में क्या होता है? What is an act? Act is nothing but a combination of sections, subsections, clauses, and subclauses.
Okay, so act is nothing but sections, subsections, clauses and subclauses. But when we use the term law, law में हम सिर्फ act की बात नहीं कर रहे, act के साथ साथ rules भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ case laws भी पढ़ेंगे. So this was a basic of what is law, why is it important, and how it comes into existence. ठीक है? Clear with this? Any questions? Any confusions? Any questions, anyone? Clear? Okay. So Abhi, now we are going to start with the very first topic, and that is the Companies Act 2013. अभी कंपनीज एक्ट की बात करूं मैं तो कंपनीज एक्ट जो आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, that was all basics. What is company, what are different types of companies, and all the basics of Companies Act you've studied at your foundation level, uh, wherein you've also studied about some doctrines, some important doctrines such as the doctrine of ultra vires and also the doctrine of indoor management. Okay, so when we talk of the Companies Act 2013 here, what are the things you're going to study under the Companies Act 2013 at CA intermediate level? So अगर मैं एंटायर कंपनीज एक्ट की बात करूं ना, तो एंटायर एक्ट में पता है कितने सेक्शंस हैं? 470 sections. But don't worry, you don't have to study all the 470 sections at CA intermediate level. The number of sections which we are going to study at your CA intermediate level is section 1 to section 148. सिर्फ सेक्शन 1 से सेक्शन 148 तक ही पढ़ना है. मतलब 470 सेक्शंस में से आप लोगों को सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ना. फेयर इनफ, फेयर डील, राइट? सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ना है, ये तो कुछ ही नहीं है ना? हाँ, कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ है. सो ऑडिटर्स तक के प्रोविजंस जो है वो सारे कवर्ड है एट योर सीए इंटरमीडिएट लेवल. Let's not talk about the new syllabus right now. अभी हम लोग November 22 पे फोकस कर रहे हैं, so let's focus on that. ठीक है? So the sections which we are going to cover are section 1 to section 148. अभी बात करते हैं the importance of Companies Act. Why are you studying the Companies Act? Why is it important for you to study the Companies Act? क्या जरूरत है Companies Act पढ़ने की? इतना बड़ा एक्ट मैम, इतना बड़ा एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why is it so relevant? अभी you will become a chartered accountant in future. और कंपनीज के साथ तो आपको आए दिन डील करना होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए या फिर मर्जर्स एक्विजिशंस के लिए या फिर टैक्स केसेस के लिए या फिर देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. उसके लिए कंपनीज के साथ तो आए दिन डील करना पड़ता है. और अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है कंपनी के बारे में, कंपनी फंक्शन कैसे करती है, कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस क्या है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? So the importance of Companies Act, talking of why Companies Act is important or why are you studying the Companies Act? So Companies Act basically, as the name itself suggests, it talks about the company form of organization. Company, what is a company form of organization and how does a company form of organization work? Now, when we are talking of company form of organization, जब हम businesses की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग types of organizations होते हैं. It could be a proprietorship, a partnership, a limited liability partnership और a company. So जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है वो अलग अलग टाइप से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, राइट? कोई सोल प्रोप्राइटर के जैसे रन करता है, कोई पार्टनरशिप के जैसे रन करता है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करता है और कोई कंपनी स्टार्ट करता है. अभी कंपनी क्यों स्टार्ट करेगा कोई? अभी से यू हैव अ से अभी का एक बड़ा विजन है. अभी को मुकेश अंबानी के जैसा बड़ा सा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है? सो
I hope you don't mind me taking your names. It is more relatable when I take your names in the example. इसलिए ले रही हूँ. So I hope you do not mind me taking your names, right? Okay. ठीक है. So अभी का एक ड्रीम है that he wants to become a big businessman. मुकेश अंबानी से भी बड़ा बिजनेसमैन बनना है अभी प्रोप्राइटरशिप में वो पॉसिबल नहीं है. स्केलिंग अप इज पॉसिबल इन प्रोप्राइटरशिप एज वेल. नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, बट देयर इज अ लिमिट टू इट. और अभी को ना आईपीओज रन करने हैं, पब्लिक इशू करना है, पब्लिक से पैसा लेना है, बहुत सारा काम करना है, अपने बिजनेस को फैलाना है. और उसके लिए जो सबसे एप्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनी डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है. अभी कोई बोलेगा कि मैम एलएलपी तो खोल सकता है, एलएलपी तो बड़ा होता है और लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है एलएलपी में. एलएलपी और कंपनी के फीचर्स मोर और लेस सेम ही है. हाँ, मोर और लेस सेम ही है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्केलिंग विच दिस पर्सन वांट्स टू डू. सो एलएलपी में भी स्केलिंग इज पॉसिबल, अपस्केलिंग इज पॉसिबल, नो डाउट इट इज पॉसिबल इन एलएलपी एज वेल. बट अगर किसी का विजन इतना बड़ा है कि उसको बहुत ज्यादा अपस्केल करना है, पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक का पैसा लाना है, तो उस सिचुएशन में तो भाई कंपनी ही खोलनी पड़ेगी. सो दैट्स वेयर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी रेलेवेंट. सो company form of organization, because it is very relevant in today's time, it is very important for us to understand what are the different rules and regulations, different provisions which govern a company. कंपनी को कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं, कंपनी में कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, क्या सारी चीजें हैं कंपनी की. issue of prospectus, issue of capital, what is share capital, what are debentures, charges, deposits, ये सारी चीजें जो है ये हम आपके सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ने वाले हैं. So why are you studying Companies Act? So that you understand all the basic provisions with regard to a company. And when you go and, if someone asks you about how a company form of organization works, or how is a company incorporated, या फिर company काम कैसे करती है, तो आप इन सभी चीजों का, सभी questions का आंसर आसानी से दे पाओगे only if you know company कैसे चलती है, company कैसे बनाई जाती है. तो ये सारी चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं. नाउ टॉकिंग ऑफ व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एन एक्ट, सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी आप कोई नया एक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिक्स एक्ट के आपको पता होने चाहिए. अभी जैसे कोई भी आप बुक पढ़ते हो, इफ यू रीड बुक, इट हैज अ प्रीफेस गिवन, इट हैज 4 वर्ड होता है बुक में लिखा हुआ, और फिर इंडेक्स आता है आपका. हालांकि हम लोग प्रीफेस और फोरवर्ड को पढ़ते नहीं है बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट. वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू लुक एट द प्रीफेस एंड रीड द प्रीफेस ऑफ द बुक, या फिर फोरवर्ड हम पढ़े. हम तो डायरेक्ट फर्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग और विदाउट लुकिंग एट द प्रीफेस. बट जब हम एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट का जो बेस होता है वो होता है प्रियम्बल में. मतलब एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट का स्कोप क्या है, what is the scope of the act, what is why this act has been made, what is the objective with which the act has been made. We should know it. If you do not know the purpose with which a particular law has been made, आप उसको अप्लाई कैसे करोगे? अगर आपको किसी चीज का पर्पस ही नहीं पता है तो आप उसका एप्लीकेशन कैसे करोगे, राइट? कोई भी चीज से यू परचेज समथिंग, हर चीज के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है. अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू यूज द थिंग प्रॉपर्ली. Yes, in some cases it is fine, you may be able to use things even without reading the instruction manual, but generally कुछ भी आता है नया तो we do look at the instruction manual ना, to get a understanding कि उसका मतलब क्या है, ये क्या किस चीज के लिए यूज होता है, इसको कैसे यूज करना है. सो सिमिलरली जब हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, एक एक्ट पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, you should always begin with the preamble. Preamble, as soon as I use this word preamble, I'm sure the preamble of the Constitution of India would have come to your mind. So जैसे Constitution of India का एक preamble होता है, वैसे ही हर एक्ट का एक preamble होता है. Preamble basically defines the scope and object with which a particular act has been made.
So आज भी हम कंपनीज एक्ट जब शुरू कर रहे हैं, we'll start with the preamble. It is only a single line, okay? It is not a lengthy preamble, but we'll start with the preamble of the Companies Act 2013, and let's have a look at it. So I'll show it to you from the bare act. Yeah. So here's the preamble. It says an act to consolidate and amend law relating to companies. So this is the preamble. कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ फर्स्ट पेज होता है, बट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे इट इज ओनली अ लाइन. इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव विथ व्हिच द एक्ट हैज बीन मेड. So this is an act. An act means here it is being, which act is being referred? It is the Companies Act 2013, which is being referred to here. So preamble, it states it is an act to consolidate, that is to group or to consolidate and amend. Amend means making some changes. Amend the law relating to companies. So the objective with which the Companies Act has been made, it is basically to consolidate, that is to group together and to change any law which is relating to company. This is the main motive, this is the main objective of why the Companies Act 2013 has been enacted, has been made. So ये जो है, ये है preamble of the act. Clear? समझ में आया ये? Are you all clear? Are you all clear with the concept of preamble? Okay. So that was the preamble of Companies Act 2013. अभी हम आगे बढ़ते हैं. So act पढ़ रहे हैं. So let's just a minute. Okay. So let's talk about the structure of the Companies Act 2013. It contains 470 sections in all. It contains 7 schedules and 29 chapters. So ये सारा जो है, this is basic structure of the Companies Act 2013. Schedules basically, schedules either give us the format of certain things or give us details of certain other things. Chapters basically जैसे एक आपका टेक्स्ट बुक होता है, टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, वैसे ही अलग अलग चीजें जो है कंपनीज एक्ट में भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है. So this is the basic structure of the Companies Act 2013. So it contains 470 sections, 7 schedules, 29 chapters, and हर chapter के साथ rule होता है अलग, because every chapter deals with something different. So there's a different rule which is prescribed along with the act. Now talking of which ministry regulates the Companies Act, who forms the rules and regulations. So it is the Ministry of Corporate Affairs.
that is MCA, which governs or which notifies several things with regard to a company. And इनके अंडर आते हैं रीजनल डायरेक्टर्स. सो हर स्टेट के हर एरिया के अलग अलग रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं who have been designated with different tasks. और फिर इनके अंदर आते हैं रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज. So ROCs, they basically take care of the registration of companies, any changes which are being made in the company's registration, and all the functioning of the company. So ROC basically are the ones who are communicating with the company on a regular basis. So ये जो है, this is basically the hierarchy of who govern the company form of organization, who are the different authorities who govern or administer the company form of organization. So it is the Ministry of Corporate Affairs, then unke niche aate regional directors who have been assigned with different regions, different states. And then comes ROC. So ROC also have different jurisdictions. Every city has a different registrar. So, and registrars, they basically take care of the incorporation of companies, that is registration of the companies, and all the matters with respect to the companies, all the correspondences of the companies, they happen with the registrar of companies only. So this is the hierarchy of administration in case of a company form of organization. अभी हमने ये तो समझ लिया कि कंपनीज एक्ट बना. इनिशियली क्या था? पहले देयर वाज कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, इनिशियली देयर वाज अ कंपनीज एक्ट 1956 और वो एक्ट को रिपील किया गया. इस एक्ट को रिपील किया गया और एक नया एक्ट बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013. अभी क्या जरूरत थी? ऑलरेडी एक्ट था ना, तो फिर व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिंगिंग इन कंपनीज एक्ट 2013? रीजन वाज LPG. What is LPG? Gas cylinder की बात नहीं हो रही यहाँ पे. It is the policy which was brought in 1991. Liberalization, privatization and globalization. थोड़ा सा civics पढ़ रहे हैं और वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये civics से related भी है. Okay, so this policy was brought in, liberalization, privatization and globalization policy was brought in the year 1991. And ये भी देखा गया था that Companies Act 1956, it did not contain provisions for corporate governance, and some essential points were not covered by the Companies Act 1956, and also it was not structured. But when we talk of Companies Act 2013, Companies Act 2013 is a lot more structure, is made in a lot more structured form than the 1956 Act. And इसलिए बोलते भी है that it is made in a skeleton system or skeleton, it is in the structure of a skeleton because, and this is a question which has been asked in MCQ as well. What was the approach behind making, what is the structure of Companies Act? So it is basically skeleton approach, or rather it is structured in a form of skeleton. जैसे skeleton पूरा structured होता है ना, वैसे Companies Act 2013 भी जो है उसको बहुत ही structured manner में बनाया गया है. इसलिए हम बोलते हैं कि Companies Act 2013 has been made on a skeleton based approach. ठीक है. So 1956 वाला एक्ट जो था, it was very lengthy, did not cover certain important aspects such as corporate governance, whistleblowing, etc. And that's where there was a need. बहुत पुराना भी हो गया था एक्ट और changes उसमें करके कोई फायदा था नहीं. And that's where lawmakers and government, they realized that there is a need of a new law to come into place right now, and that's when Companies Act 2013 was made and it was brought into existence. Though the act
was made in the year 2013. Most of the sections of this act were applicable from 1st of April 2014. ऐसा कभी नहीं होता है कि जिस दिन एक्ट को असेंट मिल जाता है उसी दिन से एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है. So the application happens in a phased manner. At least for Companies Act 2013, it happened in a phased manner because पहले एक पुराना लॉ ऑलरेडी था इन एग्जिस्टेंस और उस लॉ को there was a transition period that the old law had to be removed from existence and the new law had to come up. So जो application हुआ sections का of Companies Act 2013, it happened in a phased manner. एक phase में हो रहा था application of different sections. Okay, so though the act was made in the year 2013, it is not that all the sections also came into effect from the same date itself. ऐसा नहीं है. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने notifications के through, if central government specifies that from which date to which sections of the act shall be made applicable. So this act, it received the assent of the president on 29th of August 2013 and it was notified in the official gazette on 30th of August 2013 that the public will be informed that from which date different sections, different provisions of these act will come into effect. So section 1, it came into force on 30th of August 2013. 98 sections came into force on 12th of September 2013 and 143 sections were imposed from 1st April 2014. So सारे sections, सारे 470 sections. So initially when the act was made, there were 472 sections. ठीक है, जब initially act बना तब 472 sections थे. Those initially जब act बना तब 472 sections थे. दो sections delete हो गए. And that's why there are 470 sections now. And of these 470 sections, सारे के सारे एक साथ apply नहीं हुए. Section 1 पहले ही हो गया. फिर उसके बाद 98 sections they came into effect from 12th of September 2013. And then 143 sections they came into effect from 1st of April 2014. So that's how, in a phased manner, the application of the act was made. It happened. Now talking of the Companies Act 2013 and its sections. So let's start with section 1. Let's start with section 1 of the Companies Act 2013. अभी हर किसी एक्ट का सेक्शन 1 ना एक ही चीज के बारे में बात करते हैं. क्या है वो चीज? शॉर्ट टाइटल, extent and commencement. So let's talk of section 1 of the Companies Act. Now short title or title of the act is the Companies Act 2013. अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट लिखा, इफ यू नोटिस्ड, द टी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और ए इज कैपिटल. ऐसा मैंने क्यों किया? इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट या फिर बस लिखने में अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया? What do you think? Is there a reason behind it, or just for presentation purposes I have written it in this manner? क्या लगता है? Is it only for presentation purposes or is there a reason behind this? Come on, answer. अभी 1 मिनट में आंसर नहीं किया. I'll ask 2 more questions now. Okay. Arya thinks it is for presentation purposes. Okay.
Listen, law में ना कुछ भी सिर्फ presentation के लिए नहीं होता है. There's a reason behind this. When you are referring to a statute, जब मैंने यहाँ नाम लिखा, I'm referring to a statute. I'm referring to an act which is made. अभी जब आप अपना नाम लिखते हो, so Arya, when you write your name, is the first alphabet of your name not capital? Whenever you're writing your name, is the first alphabet of your name not capital? It is, right? So similarly, जब हम एक act की बात कर रहे हैं, act is also a statute. इसको भी बनाया गया, it has come into existence. हाँ, it is not a person, but it is a statute. और statute को हमें respect देना होगा. And that's the reason why यहाँ T capital है, यहाँ C capital है और यहाँ पे A capital है. Which means in your examination, whenever you are using the word act and you are referring to a statute, the A has to be capital. कैपिटल ए लिखना पड़ेगा. तो जहां पे भी यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट, द ए हैज टू बी कैपिटल, बिकॉज इफ यू यूज अ लोअर केस ए, दिस गिव्स मीनिंग. इसका मीनिंग होता है एक्शन, और ये वाले का मीनिंग होता है स्टैट्यूट और अ लेजिस्लेचर. So there's a difference. So even an uppercase alphabet and a lowercase alphabet make a lot of difference when we are talking of law. So these are basic things जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. Now talking of extent, the Companies Act 2013 applies to whole of India. So this act is applicable to whole of India. There's no exception, not even to the state of Jammu and Kashmir. अभी उसका कोई point ही नहीं बनता. So this act is applicable to whole of India. Talking of commencement, now there's no one date of commencement here, reason being the sections were made applicable in a phased manner, so there are different dates. So this is what section 1 of every act talks of. Abhi, apart from this, section 1 subsection 4 of the Companies Act, it talks about its applicability. So section 1 subsection 4 of the Companies Act 2013 talks about the applicability of the act. Now to which companies is this act applicable is what we'll understand. So सबसे पहले तो, if a company has been incorporated under this act, that is the Companies Act 2013, तो but obvious उस पे Companies Act के provisions apply होंगे. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही इस एक्ट के अंदर हो रही है, अगर कंपनी रजिस्टर ही इस एक्ट के अंदर हो रही है, तो उस कंपनी पे इस एक्ट के प्रोविजंस तो लगाना ही पड़ेगा, राइट? So the first inclusion or the first type of company to which the Companies Act is applicable is a company incorporated under this act or any other previous company law. This act means the Companies Act 2013. Sorry, there was some technical glitch. I'm sorry for that. मेरा system hang हो गया था. Okay, just give me a minute.
Okay. Sorry, there was some technical glitch. प्रीवियस कंपनी लॉ बेसिकली मींस जो भी कंपनी लॉ पहले एग्जिस्टेंस में थे ना, अभी जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। अभी कंपनीज एक्ट 1956 के पहले भी कंपनीज तो एग्जिस्टेंस में थी, तो दूसरे कंपनी लॉज थे, तो वो सारी कंपनीज जो पुराने एक्ट्स में बनी है, अभी जैसे नया एक्ट आ गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पुरानी जो कंपनीज है वो अभी कंपनी होगी नहीं क्योंकि ये तो पुराने एक्ट में बनी है, ऐसा नहीं होता, राइट? So previous company law means the older company laws which were in existence. So the first type of company which to which this act is applicable is a company which is incorporated under this act or any other previous company law. The next type of company is a banking company. Banking company matlab basically the banks. Next is insurance company. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज. Okay, so these three type of companies जो है, that is banking company, insurance company and electricity company, यहाँ पे companies act apply तो होता है, but there is a catch. Now what is the catch here? Let's understand. Now banking companies को regulate करता है Banking Regulation Act. Insurance company के लिए there is Insurance Act and IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority. Electricity companies are governed by Electricity Act. So there are different laws which are in place which govern these type of companies. Abhi say there's an inconsistency in what these act says and what the Companies Act say. मतलब इन एक्ट में कुछ लिखा हुआ है पर कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कुछ और ही बात कर रहा है. So if in case there's an inconsistency. So in case there's an inconsistency between the provisions of these specific acts and the provisions of the Companies Act 2013, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा या स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई होगा? Which act will apply in case of these inconsistency? Which act will apply in case there's any inconsistency? Special act. Okay, I assume that you mean the specific act. Okay, so whenever there's inconsistency between the provisions of the specific act and the Companies Act 2013, उस situation में the specific act will apply and not the Companies Act. The provisions of the specific act, the act which governs these type of companies will be applicable, will be made applicable. Okay. So in case of banking company, insurance company and electricity company, Companies Act 2013 is applicable. But however, subject to in a case there's any inconsistency between the specific act which is applicable to these companies, तो उस situation में specific act apply होगा, Companies Act नहीं apply होगा. Apart from these, Companies Act is also applicable to companies formed under Special Act.
Special acts are basically, to give you a few examples of companies formed under special act, could be the Reserve Bank of India. Also includes the Life Insurance Corporation. There's a separate act under which it has been formed. So companies formed under special act जो है वो भी उन पे भी Companies Act applicable होगा. However, यहाँ पे भी in case there's any inconsistency, तो वो जो special act के provisions है वो apply होंगे और Companies Act के provisions नहीं apply होंगे. And finally, the Companies Act is also applicable to body corporates. Now, what is body corporate? We'll understand in some time. So Companies Act is also applicable to body corporates which are notified by the central government. So सेंट्रल गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करेगा कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है इन पे आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करो. तो उस सिचुएशन में वील अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 to those body corporates as well which have been notified by the central government. So this is what section 1 talk of. Now, why do you think it is important for us to know कि एक्ट किस पे अप्लाई करता है और किस पे अप्लाई नहीं करता? क्या जरूरत है ये जानने की? कंपनीज एक्ट पढ़ तो रहे हैं ना, तो ये क्यों समझना चाहिए, ये क्यों समझना जरूरी है कि एक्ट इज एप्लीकेबल हियर और इज इट नॉट एप्लीकेबल हियर? हमें तो समझना नहीं था मैम, बट आप समझा रहे हो इसलिए हमने सुन लिया. इज दिस व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? क्यों समझना जरूरी है ये सारी चीजें? ओके, आई थिंक अभी मुझे आप लोगों के साइलेंस का कुछ करना पड़ेगा. I'll not move ahead until you answer. ओके, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एक्ट किस पे अप्लाई करता है तो आप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई कैसे करोगे? प्रोविजन तो समझ में आ गया, एक्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया, पर यही नहीं पता कि एक्ट को अप्लाई किस पे करना है, तो फिर आप क्या करने वाले? प्रोविजन पता हो के कोई मतलब नहीं है इफ यू डू नॉट नो ऑन whom you have to apply the provision and on whom you do not have to apply the provision. से अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है ऑपरेशन कैसे, अगर कोई डॉक्टर है उसको थियोरी पता है पर प्रैक्टिकली करते नहीं आता है, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? उसको पता है हाँ हाँ ये ऑपरेशन इस तरह होता है, बट उसने कभी प्रैक्टिकली किया ही नहीं है, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओगे. तो सिमिलरली अगर एक सीए है जिसको प्रोविजन तो पता है पर उसको ये नहीं पता कि प्रोविजन को अप्लाई कैसे करना है, किसके ऊपर करना है, आप ऐसे सीए के पास जाओगे? नहीं जाओगे, राइट? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि एक्ट अप्लाई किसको करता है, तभी तो आप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई कर पाओगे, राइट? So with this we have now completed section 1 of the Companies Act 2013. अभी जाते हैं section 2 पे. Now section 2 of all the acts, almost all the acts deal with one thing and that is definitions. So जो भी एक्ट में टर्म्स यूज होने वाले हैं, जो भी टर्म्स एक्ट में यूज होने वाले हैं उनको डिफाइन करता है सेक्शन 2. Section 2 is mostly the definition section of every act. So section 2 contains definitions of different terms which are used in the entire act. तो मतलब section 2 में जो definition दिया हुआ है ना, एक्ट में अगर कहीं पे भी वो वर्ड आ गया उसका मतलब वो होगा जो section 2 में दिया हुआ है. So section 2 gives us the definitions, the meaning of different terms which are used in the act. ठीक है? So let's start with section 2. Abhi, before I start with section 2, let me give you some interesting details about section 2 of the Companies Act 2013 and also basic of section 2. So if you look at this box here, it says section 2 is a definition section which provides the various terminologies which are used in the act. So the different terms which are used in the act are defined in section 2 and section 2 gives us the details of different terminologies which are used in the act.
Okay, so section 2 gives us the details of various terminologies which are used in the act. अभी जब हम section 2 की बात कर रहे हैं of Companies Act, let me give you a few details. So section 2 जैसा अभी हमने समझा, it contains the definitions. अभी जो Companies Act का section 2 है ना, उसके जो अलग-अलग clauses है, अलग-अलग clauses जो है, they are arranged in an alphabetical manner. So this is one peculiar feature या फिर unique feature of section 2 of the Companies Act, that the sections here or under section 2 the clauses have been arranged alphabetically. Generally ऐसा नहीं होता है. आप किसी और एक्ट को उठा के देखो तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो क्लॉजेस है डेफिनेशन के वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, बट कंपनीज एक्ट में ऐसा है. सो दिस इज just a piece of information for you, and also you can use this to remember the section numbers कि हाँ ये alphabet यहाँ पे आ रहा है, इसके आसपास section number होगा. So this is one unique feature of the section 2 of the Companies Act 2013. Now talking of section 2, अभी section 2 के बाद ये जो भी brackets में आता है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या फिर 32 आ रहा है, इनको हम subsections नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं clauses. These are clauses. Now a question would come up to your mind कि मैम section के बाद में bracket है तो subsection होना चाहिए. Why are we calling it a clause and not a subsection? Let me go to the bare act and explain this to you. Okay, so this is the Companies Act. Now, if we look at section 2 here, तो ये क्या बोल रहा है? Section 2, what is the opening line of section 2? How does section 2 start? So definitions, in this act, unless the context otherwise requires. ठीक है? क्या बोल रहा है? In this act, unless the context otherwise requires, and then there are different terms and their definitions and their meanings which have been stated. Let me go to another section and show you how things are there. तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन नंबर सेक्शंस है ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड. इट स्टार्ट्स विद एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, और जो भी है पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, जस्ट लाइक इन अ डिक्शनरी. Just a minute. Now if you look at section 3, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सबसेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, या सेक्शन 4 भी देखो डायरेक्ट सबसेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है. एंड इन सर्टेन सिचुएशंस व्हाट हैपेंस इज, जो ओपनिंग लाइन होता है ऑफ द सेक्शन, इट इज रिलेटेड टू व्हाटएवर हैज बीन स्टेटेड डाउन नीचे जो भी सबसेक्शंस में दिया होता है.
सेक्शन 2 में ऐसा कुछ नहीं है. सेक्शन 2 में बस एक ओपनिंग लाइन दिया हुआ है that unless the context otherwise requires, there are different terms and their meanings. And that is the reason why there's no correlation between the opening line of the sections and the different terms which have been given. And the terms are also not interrelated to each other. They are not dependent on whatever has been stated in the opening sentence of the section. And that is the reason why हम section 2 के बाद क्लॉज बोलते हैं. 2 के बाद ये जो ब्रैकेट आता है सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन में, we call it 2 clause and not 2 subsection. So whenever you are talking of definitions, or whenever you are quoting a section with definition, you should not refer to it as 2 subsection 1 or 2 subsection 2. No, it is 2 clause 1 or 2 clause 2. So this is one thing which you should know. However, at other places wherein the subsections are interrelated, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसको सबसेक्शन बोलते हैं. बट जहां पे इंटर रिलेशन या इंटर डिपेंडेंसी नहीं होता है, उस सिचुएशन में ये होता है क्लॉज एंड नॉट अ सबसेक्शन. क्लियर है? समझ में आया? Did you understand what I was trying to emphasize on? Okay, so let's move on. Let's start with the first definition for the day. And this definition which we are going to look at is the definition of the term company. So 2 clause 20 defines a company. Company क्या है? I am sure you all must be aware of the definition of company. आप लोगों ने पढ़ा है Companies Act, फाउंडेशन में बेसिक्स तो पढ़े ही है, और कंपनी का डेफिनेशन तो पढ़ा ही है. तो व्हाट इज अ कंपनी? What is a company? Do not give me the features of company. I'm not talking about the features. I'm asking you the definition of company. What is a company? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया ना तो मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगी, फिर उसका आंसर करना ही पड़ेगा आप लोगों को. If you don't answer this question, I'll ask a difficult question and you'll have no option, then you'll have to answer it, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. Okay, fine. So you have chosen to answer the difficult question. Okay, good. So difficult वाला question आप solve करोगे, easy वाला question मैं solve करूंगी. So company, as per the Companies Act 2013, definition goes this way. Company means, ये term याद रखना, means a company incorporated under this act or any other previous company law. So company means a company incorporated under this act, which means Companies Act 2013 or any other previous company law. So any previous company law which was in existence earlier. So ये है company का meaning. It is either a company जिसको Companies Act 2013 में रजिस्टर किया है, 13 में इनकॉर्पोरेट किया है, या फिर वो एक कंपनी है जो एक प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो चुकी है. So company, it includes both companies which have been incorporated under the Companies Act 2013 as well as the companies which have been incorporated under any previous company laws. Okay, so this is what a company means. Company का definition clear है? Yes or no? Are you all clear with the definition of company? Yes, okay. So अभी बारी है मेरे क्वेश्चन की. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. ये कंपनी ठीक है, अभी डोमिनोज का नाम सुना है? ऑब्वियसली सुना ही होगा. या फिर फेसबुक का नाम सुना है? मेटा नाउ, बट ठीक है, फेसबुक ज्यादा जल्दी समझ में आता है. सुना है, नहीं सुना है?
मैम हम इन सब चीजों से दूर ही है। सुना है, एक नहीं सुना, दूसरे ने नहीं सुना। सुना है, नहीं सुना है? सुना है, ओके। सो अभी डोमिनोज और फेसबुक है, ये दोनों जो कंपनीज है ना, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। लेट मी मेक इट सिंपल। ये दोनों कंपनीज जो है, दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अभी आती है मेरे सवाल की बारी। मेरा सवाल जवाब आप लोगों का। दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। My question is, do they fall under the definition of company as per the Companies Act? Or rather, are they covered by the definition of company? मतलब अगर कंपनीज एक्ट में द टर्म कंपनी इज बीइंग यूज्ड, सो वहां पे क्या डोमिनोज कवर होगा या क्या फेसबुक कवर होगा? आर दे कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? Is Domino's a company as per the Companies Act 2013? Is Facebook a company as per the Companies Act 2013? Are they covered under Section 2 Clause 20? Will they be called a company as per the Companies Act 2013? So ये है मेरा सवाल. I give you time. Take time, think and answer. Think and answer. Do not reach or do not jump upon conclusions. Think and answer. Okay, so Arya says yes, they are foreign companies. अरे पर कंपनी के डेफिनेशन में तो मैंने कहीं पे भी फॉरेन वर्ड यूज ही नहीं किया और कहीं पे भी फॉरेन वर्ड भी नहीं आ रहा है कंपनी के डेफिनेशन में. अभी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, एनी इनपुट्स? आपको क्या लगता है, क्या डोमिनोज और फेसबुक जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, are they covered under section 2 clause 20? Will they be companies as per section 2 clause 20? Now I think I'll also have to go silent in order to get answers from you all. No for what? अभी ये मेरे साइलेंट होने पे नो लिखा है या कंपनी फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, सॉरी डोमिनोज और फेसबुक कंपनी नहीं है इसके लिए नो लिखा है? हाउ विल आई अंडरस्टैंड? प्लीज बी वेरी क्लियर विथ योर आंसर्स. अच्छा ठीक है. सो डोमिनोज और फेसबुक जो है, let's not spend too much of time here because we have a lot to do. Domino's और Facebook जो है, they are companies which are not incorporated in India. We not incorporated in India मतलब क्या? Incorporated outside India. Simple. Now since they are companies incorporated outside India, इसका मतलब क्या है? Are they incorporated under the Companies Act 2013? Definitely not. Are they incorporated under any other previous company law?
Definitely not. So, which means they are not covered by this definition of company. They do not fall under this definition because they are neither incorporated under Companies Act 2013 nor they are incorporated under any previous company law. और क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन ऐसे हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये कंपनीज कंपनी है ही नहीं। मैम, डोमिनोज तो कंपनी है, फेसबुक भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। हाँ, फॉरेन कंपनी है, बट फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, अगर आपको याद होगा आपने फाउंडेशन में भी ये पढ़ा है, इट इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बट अगर कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी टर्म कंपनी यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है इस टर्म कंपनी में फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड नहीं है। बाय, अभी हमने समझा। बाय। So, wherever in the entire Companies Act the term company is being used, it does not include a foreign company. Reason being, the definition of the term company, it says कि companies means, and क्योंकि word means use किया है, इसका मतलब this is an exhaustive definition. मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यू हैव नो स्कोप ऑफ इंक्लूडिंग एनी अदर थिंग इन द डेफिनेशन अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर हैज बीन स्टेटेड इन द डेफिनेशन। सो कंपनी का डेफिनेशन तो मीन्स टर्म कंटेन करता है, which means it is an exhaustive definition. It is a company which is incorporated under this act or any other previous company law. So which means foreign company is not a company. It is a company, but it is still not a company. As per the Companies Act 2013, so Companies Act 2013 में जहां पे भी टर्म कंपनी यूज होगा, इसका मतलब ये है कि वो टर्म कंपनी में सिर्फ वही कंपनीज आएगी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है। इट विल नॉट कंटेन अ फॉरेन कंपनी। क्लियर? समझ में आया अभी दोनों को? Yes, no, or not applicable? दोनों ऑल्टरनेट आंसर करते हैं। एक बार एक आंसर करता है, दूसरी बार दूसरा आंसर करता है। एक आंसर कर देता है तो फिर ऐसे दूसरे को ऐसा लगता है कि आंसर करने की जरूरत नहीं है, इसने मेरा आंसर दे दिया। ओके, सो आर यू बोथ क्लियर? यस, ओके। तो अभी था ये कंपनी से रिलेटेड, बट एक डाउट आएगा, वो ये कि अभी मैम फॉरेन कंपनी को भी प्रोविजंस एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट के, तो यहाँ पे तो आपने डेफिनेशन में से ही फॉरेन कंपनी को निकाल दिया, तो फिर अभी फॉरेन कंपनी पे प्रोविजंस अप्लाई कैसे करेंगे? अभी बताते हैं। अभी आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और वो डाउट क्लियर होगा जब हम देखेंगे एक और डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट का। Have you heard this term body corporate earlier? ना तो बोलना ही मत, you do not have an option to say no because you have heard this word. फाउंडेशन लिख के आए हो अभी, तो ये वर्ड तो पक्का पता होगा। Yes? अभी देखो, I have to deem your silence as acceptance here. I'm sure फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स तो अभी भी फ्रेश हो गए आपके दिमाग में। Mere silence does not amount to acceptance, but here I'll have to deem your silence as acceptance. मैं बोल बोल के मैं पूछ पूछ के थक जाऊंगी, बट आप लोग आंसर नहीं करोगे, है ना? You've decided not to answer her. Whatever it is, but I'll still ask you questions. ठीक है? So the next definition, the next term which we are going to understand is a body corporate. Body corporate क्या होता है, और how are we going to include a foreign company में provisions कैसे apply करें? So when we talk of body corporate, let me first clear a misconception which would be there in your minds, and उसके बाद में हम definition देखेंगे. Now, this is also a question which can be asked as an MCQ, true or false type का question है.
Which is a wider term? Is body corporate a wider term or company wider term? Is body corporate a wider term or is company a wider term? और क्योंकि आप लोग मुझे आंसर नहीं करने वाले हो, लेट मी आंसर इट. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म. बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म क्यों है? The reason being, body corporate includes a company. ठीक है. जब हम बॉडी कॉर्पोरेट टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इंक्लूडेड है. कंपनी डज नॉट इंक्लूड अ बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट कंपनी डज नॉट इंक्लूड अ बॉडी कॉर्पोरेट. और बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी के अलावा भी चीजें इंक्लूडेड होती है. देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल व्हिच आर इंक्लूडेड इन अ बॉडी कॉर्पोरेट. लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नाउ. Section 2 clause 11 defines a body corporate, and it says a body corporate or a corporation includes. क्या term use हुआ यहाँ पे? Includes. मतलब क्या? This is an inclusive definition. Inclusive definitions का मतलब क्या होता है? Inclusive definitions are basically definitions wherein apart from whatever has been specifically stated, apart from the specific inclusions in the definitions, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उस डेफिनेशन में इंक्लूजन्स होने चाहिए, वो भी चीजें इंक्लूड होती है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. सो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अरे यहाँ पे आ गया फॉरेन कंपनी. हम अभी तक इतना परेशान हो रहे थे ना कि फॉरेन कंपनी पे प्रोविजंस कैसे अप्लाई करेंगे. ऐसे अप्लाई करेंगे. तो जहां पे भी टर्म बॉडी कॉर्पोरेट यूज होगा, वहां पे सिर्फ कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी भी कवर्ड होगी. So a body corporate includes a company incorporated outside India, but does not include a cooperative society which is registered under any law which is related to cooperative society, or any other body corporate which has been notified by the central government. So when we talk of a body corporate, it includes a foreign company. It is a company incorporated outside India. अभी जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ एक ही इंक्लूजन दिया हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में कवर्ड है वो इंक्लूड नहीं हो गया. If you remember, when you studied the topic of LLP, you have understood that LLP is a body corporate. तो यहाँ पे LLP भी included होगा. Just because it has not been stated specifically doesn't mean that it is not included in here. Reason being, the term includes has been used in the definition, and an inclusive definition is basically a definition jahan pe not only the specific inclusions which have been mentioned in the definition are included, but also any other terms of general common understanding will also be included. So yahan pe when we talk about body corporate, it includes a company, it includes a foreign company, it includes a limited liability partnership, and it also includes a foreign limited liability partnership. And specific exclusions क्या है यहाँ पे? Specific exclusions में आते हैं cooperative societies. So cooperative societies, to cite examples, it could be cooperative housing societies. Yeah, there are different cooperative societies which are registered under the Cooperative Societies Act. So वो cooperative societies जो है उनको हम body corporate नहीं बोलेंगे. या फिर any body corporate which is notified by the central government. So central government ने specifically notify किया है कि ये जो body corporate है, इसको आप body corporate consider नहीं करोगे. So अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन दे दिया है, so हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट फिर कंसिडर नहीं करेंगे. So these are the two specific exclusions from the definition of body corporate.
क्लियर? सो मतलब जहां पे भी टर्म कंपनी होगा उसमें फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, पर जहां पे भी टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड होगा वहां पे फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड है. क्लियर विद दिस? आई बोथ क्लियर विद दिस? चलो पहली बार दोनों ने तो आंसर दिया कम से कम. ठीक है. सो we've now understood two terms. One company, second body corporate. अभी हम बात करते हैं about different types of companies. So first we'll cover types of companies on the basis of liability. Then we'll understand about private company and public company. And उसके बाद we'll move on to holding company and subsidiary company. अभी जो point समझा है ना about company and body corporate and foreign company, ये point याद रखना. इसी point को लेके ना बाद में आप लोग अपना answer change करने वाले. So your answer was currently no, a foreign company is not a company. You will yourself change your answer when we go to the definition of holding and subsidiary. और फिर तब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये पॉइंट याद रखना. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ कंपनीज. ओके. सो टाइप क्या? You want a break, Arya? I'm sorry, there wouldn't be any break right now. It's already 3:50. Uh, we'll do basic types of companies और मैं थोड़ा सा जल्दी आपको छोड़ूंगी. ठीक है? No break. आंसर भी नहीं कर रहे हो फिर भी थक गए हो. सिर्फ yes no लिख के you all are tired. कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला. No break. Okay, so talking about types of companies, let's first talk about the types of companies on the basis of liability. इसके आंसर्स तो अभी आप लोग दोगे बिकॉज ये वाली चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. आई बिलीव आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. सो there's company limited by shares. There's company limited by guarantee. And there's an unlimited company. So what is a company limited by shares? What is a company limited by guarantee? And what is an unlimited company? You're going to give me answers to this. And I believe आप लोगों को इसके बारे में पता होगा. फाउंडेशन की पढ़ाई करके आए हम लोग, हमको इसके बारे में तो पता है. What is a company limited by shares? Unpaid value on shares. Unpaid value on shares पे क्या? हाँ,
ऐसे आधा आधा आंसर देते हो एंड यू वांट मी टू जॉइन थिंग्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर आंसर मीन्स, है ना? हमारा हमको जैसे आंसर करना है हम वैसे आंसर करेंगे। अब आपको जो समझना है आप समझो। ओके, so a company limited by shares is basically a company where the liability of members is limited to the extent of unpaid value on shares. Now there's a reason मैंने members को इतना ऐसे caps में क्यों लिखा है। जब हम liability की बात करते हैं in case of a company, it is not the company's liability which is limited, it is the members liability which is limited. कंपनी का liability limited नहीं होता है, कंपनी के members का liability limited होता है, क्योंकि कंपनी को जब wind up करते हैं या फिर जब कंपनी का liquidation होता है तब क्या होता है, all the assets of the companies are sold, all the assets of the company are sold and the liabilities are paid off after realization of the assets. So when we talk of liability, it is not the company's liability, but rather it is the members' liability which is limited. So that is the reason why when we talk of a company limited by shares, it is a company where the liability of members is limited to the extent of unpaid value on the shares. Clear? Hai? So unpaid value on shares means what? Say for example, there is a share of 10 rupees on which say Abhi ka share है. अभी है ना हमारे क्लास में, सो अभी he has एक one share, he has purchased one share of a company, the value of which is ₹10. Now out of 10 rupees अभी has paid 6 rupees on this share. मतलब कितना बचा है अभी को और कितना पे करना है अभी? अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी को 4 रुपए और पे करना बाकी है on the share. So in this situation Abhi's liability in this company will be limited to the extent of ₹4 only, not anything over and above ₹4. 4 रुपए तक ही उसका liability रहेगा. Can the company ask for 5 rupees from Mr. Abhi? नहीं. Company can ask for only ₹4 and not any amount over and above ₹4 from Mr. Abhi. Mr. Abhi in this particular situation. Okay. So a company limited by shares is a company wherein the liability of members is limited to the extent of unpaid value on the share. Now talking of a company limited by guarantee. A company limited by guarantee, again यहाँ पे liability is limited. Liability is limited even in case of a company limited by guarantee, but in case of a company limited by guarantee, the extent to which the liability is limited is the extent of agreed amount of contribution. Agreed amount of contribution means what? A company limited by guarantee is basically a company wherein the members of the company, they agreed to contribute a certain amount at the time of winding up of the company. तो मतलब से अभी आर्या जो है, आर्या कंपनी को प्रॉमिस कर रही है कि आपका जब वाइंडिंग अप होगा ना तब आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज. So in that situation, Arya has guaranteed, Arya has agreed to contribute ₹1 lakh at the time of winding up of the company. So जब winding up होगा कंपनी का तब कंपनी आर्या के पास जाएगी और आर्या से 1 लाख रुपीज लेगी. So company limited by guarantee is a company where the liability is limited, but here to the extent of agreed amount of contribution. So the contribution which has been agreed upon by the members of the company in that particular situation, उस पे उस हद तक liability जो है वो limited होती है when we talk of a company limited by guarantee. Now when we are talking of a company limited by shares, यहाँ पे ये जो 4 रुपए है, ये 4 रुपए मिस्टर अभी से कंपनी कभी भी मंगवा सकती है. मतलब at any point of time company can make a call and make a call for this leftover amount, unpaid amount, and ask Mr. Abhi to make payment of that. A company need not have to wait till winding up, till the time of winding up.
in order to get this amount from Mr. Ravi. So this call can be made at any time. However, when we are talking of agreed amount of contribution, in case of a company limited by guarantee, उस situation में this agreed amount of contribution can be called from this person, from the member, only and only at the time of winding up and not before that. तो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ये अमाउंट जो है वो कॉल किया जा सकता है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं. And finally, talking of an unlimited company, so as the name itself suggests, it is a company where the liability is unlimited. और यहाँ पे liability unlimited कब होगी? यहाँ पे liability unlimited होगी at the time of winding up. Now say आर्या जो है वो एक unlimited company की member है, पर कंपनी के वाइंडिंग अप होने से पहले ही आर्या has ceased to be the member, मतलब she is no longer a member of that company. तो इस situation में Arya, will she be called upon to pay at the time of winding up of the company? The answer is no. Arya will not be called upon to pay at the time of winding up of the company. The reason being very simple. If you are a member, you're liable. If you're not a member, तो आपकी liability also ceases. So till the time you're a member, you are liable, unlimitedly liable. However, if you cease to be a member, your liability also ceases to exist. So with this, we've understood about three types of companies: company limited by shares, company limited by guarantee, and an unlimited company. Any doubt here? Any question or any doubt in these three types of companies? Okay. Let me just walk you through the definitions, and then we'll move to other types of companies: private company and public company. एक minute. Okay. So this is again the Bear Act. वो वाली आपके मॉड्यूल में भी यही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ. The reason I'm showing you the Bear Act is that you should be familiar कि Bear Act में कैसे चीजें होती है और उससे भी आप पता होना चाहिए how things work. Okay. So Section 2 Clause 21 defines a company limited by guarantee. Says it means, this is an exhaustive definition, means a company having the liability of whom? Of its members. So it is being clearly stated. देखो definition में भी clearly लिखा हुआ है, it is the members liability which is limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. So मेमोरेंडम में ये अमाउंट स्टेट किया होता है मेंबर्स ने दैट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो लोग कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे at the time of winding up. So the liability is limited to the extent of agreed contribution. Moving to the next definition, Section 2 Clause 22 defines a company limited by shares, and it means a company having the liability of members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. अभी से फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में हमने दिया था कि अभी ने 6 रुपए पे किए हैं और 4 रुपए बाकी. What if Abhi has paid the entire amount of 10 rupees on the share? Is he still liable or will he still be liable to a certain extent? The answer is no. He has paid the entire amount, तो फिर उसकी liability will cease to exist because उसने पूरा amount pay कर दिया. अभी तो वो company के कुछ देना बाकी ही नहीं है, तो फिर Abhi will not be liable in such a situation. Now talking about definition of unlimited company.
So unlimited किससे start होता है? U से. And like I've told you कि Companies Act के section 2 में the words have been alphabetically arranged. So unlimited company का definition जो है वो एकदम last definition है. It is defined in section 2 clause 92. Let's have a look at that. So unlimited company means a company not having any limit on the liability of its members. तो जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है members के liabilities पे, वो होगी unlimited company. So that is what an unlimited company means. Let's now start with the definition of private company and public company. तो पहले private company समझेंगे, उसके बाद में public company अपने आप समझ में आ जाएगी. ठीक है. So what is a private company? आप लोगों को क्या लगता है प्राइवेट कंपनी क्या है? टू मेंबर्स. ओके, टू मेंबर्स क्या मिनिमम मैक्सिमम या ओनली टू मेंबर्स? मिनिमम. ओके. आई So both of you have decided कि हम ऐसे टुकड़ों में आंसर देंगे. एक बार अभी आंसर करेगा और दूसरे टाइम आर्या आंसर करेगी, ऐसा कुछ है? तो फिर दोनों आंसर करो ना प्लीज. Okay, so talking of a private company, a company where a private company is a company with some minimum paid up capital. The minimum limit has not been prescribed yet. Initially था, but अभी कोई minimum limit नहीं है जो prescribe किया हुआ है. Okay, so it is a company which has the minimum paid up share capital, and it is a company wherein there is a restriction on the maximum number of members. The maximum number of members in a private company is 200. Minimum requirement is 2. Maximum number of members in a private company can be 200. It cannot go beyond 200 members. And apart from it, there's a restriction, or rather prohibition, on issue of prospectus. Prospectus is basically a document which invites people to subscribe to a company's shares. ठीक है. So क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है, इसीलिए प्राइवेट कंपनी के केस में there is a prohibition on issue of prospectus and inviting contributions from public. So there's this restriction on a private company. Disturbance. I am sorry for the noise which would be coming. ठीक है, थोड़ी देर और है. Just there's some festival here and इसीलिए आवाज आ रही है. I'm sorry for this. So coming back to private company. Private company with minimum paid up share capital, maximum number of members 200, and there is a prohibition on issue of prospectus. Prospectus issue करने पे prohibition होता है in case of a private company. ठीक है. अभी when we talk of this prohibition on issue of prospectus, why is there prohibition? There is a prohibition because
private company cannot ask for public people, normal common people to invest in the private company. There's a restriction. So prohibition है, private company cannot ask for contribution from to its securities from people. अभी when we count the maximum number of members, उसके लिए कुछ specifications है जो हमको दिया है explanation. वो क्या है? Joint holders shall be considered as one. मतलब if say there are two people who are holding one share, joint holders, जैसे joint bank account होता है banks में, वैसे ही joint holders of shares is also possible. So if two people are holding one share, they shall be counted as one and not two members. They'll be counted as one member only. अभी जॉइंट बैंक अकाउंट होता है तो एक ही बैंक अकाउंट काउंट होता है, दो सेपरेट बैंक अकाउंट्स नहीं काउंट होते. तो सिमिलरली जब दो लोग मिलके एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं उसको जॉइंट होल्डर्स बोलते हैं एंड दे विल बी काउंटेड एज वन मेंबर, दे विल नॉट बी काउंटेड एज टू डिफरेंट मेंबर्स. So first thing to be kept in mind is joint holders shall be considered as one. Second thing is employees who are members of the company shall be excluded. Abhi say for example I work for Infosys. Now I also have shares of Infosys. मतलब क्या है? I am an employee and I am also a member of Infosys. So an employee who is a member of the company shall be excluded when counting this maximum limit of 200 members. So मैं employee भी हूँ और मैं member भी हूँ. So जब 200 member का limit count किया जाएगा, क्या मुझे उसमें गिना जाएगा? The answer is no, I'll not be counted. I'll be excluded because I am an employee and I am also a member. The next person who will be excluded is an ex-employee. एक्स एम्प्लॉय को भी नहीं काउंट करते. हाँ, एक्स एम्प्लॉय को भी नहीं काउंट करते. एक्स एम्प्लॉय को कब काउंट नहीं करेंगे? एक्स एम्प्लॉय that is a person who ceased to be an employee and who was allotted shares at the time of his employment. ठीक है. सो एक्स एम्प्लॉय को कब काउंट नहीं करेंगे? से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है, आई हैव गॉट द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस नाउ एंड आई वाज आल्सो एन एम्प्लॉय व्हेन आई गॉट द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस. नाउ आई हैव सीज्ड टू बी एन एम्प्लॉय. सीज टू बी एन एम्प्लॉय मतलब मैंने इन्फोसिस छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया टीसीएस. तो अभी इस सिचुएशन में मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स तो अभी भी है. I still hold shares of Infosys, but I am no longer an employee of Infosys. So will I be counted in that 200 members ka list or not? The answer is no. No, why? Because I was allotted the shares of Infosys when I was an employee of the company. अभी अगर ऐसा होता कि मुझे Infosys के shares तब allot किए गए जब I was not an employee, तो फिर मैं count की जाती उसमें. So ex-employees are not counted in the when ascertaining the maximum number of members, provided that they were allotted shares. They were allotted shares of the company during the time of their employment. So if they were allotted the shares of the company during the time of their employment, ex-employees will not be counted. That clear? समझ में आ रहा है? Yes? No? Okay, so when ascertaining the maximum number of members, joint holders shall be considered as one. Employees who are members of the company shall be excluded, and ex-employees who were allotted shares during their employment shall also be excluded. However, ex-employees who were not allotted shares during the employment, उनको count किया जाएगा when we are ascertaining the maximum number of members of 200. ठीक है? Okay. And now talking of what is a public company. Simple है. Public company का definition बहुत simple है. A company which is not a private company. मतलब क्या? जो भी प्राइवेट कंपनी में हमने रेस्ट्रिक्शंस देखे हैं वो पब्लिक कंपनी को अप्लाई नहीं करते. There is no maximum limit to the number of members.
which means there can be unlimited members in a public company. Also, there is no restriction on issue of no prohibition on issue of prospectus. Public company, they are free to invite subscriptions from public. And the minimum number of members here in case of a public company is 7, and there is not 2 here. That is a public company. So, जो भी restrictions, whatever restrictions are applicable in case of a private company, are not applicable when we are talking of a public company. Public company के केस में वो सारे restrictions apply नहीं होते हैं जो भी private company के केस में apply होते हैं. So that was the meaning of a public company. So let's now have a look at the definition. So starting with the definition of a private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed. There is nothing which is being prescribed as of now. Definition में ऐसा दिया हुआ है, but there is nothing which is being prescribed in the rules. And which by its articles restricts the right to transfer its shares. So there is a restriction on transfer of shares in case of private company. It does not mean that the shares are not transferable, but there are certain restrictions on transferability of shares. Then, except in case of one-person company, limits the number of its members to 200. So there is a limit to the maximum number of members, that is 200. Provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall be treated as single members. So joint holders shall be considered as one. Provided further that persons who are in employment of the company and person who have been formerly in employment, matlab ex-employees of the company, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. मतलब जब employment में थे तब वो members थे, और जब employment से निकले, मतलब when they ceased to be the employee of the company, तब भी वो continue कर रहे थे to hold the securities of the company, shares of the company. So situation में they shall not be included in the number of members. And the other prohibition is prohibits any invitation to public to subscribe to any of its securities. Basically, private company जो है वो prospectus issue नहीं कर सकती है और and cannot invite public to subscribe to their shares. So this is what a private company means. Simple है, समझ में आया private company का meaning? Yes, no. Now let's have a look at the definition of public company. Public company means a company which is not a private company. So as soon as this term comes in the definition of public company, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि private company के केस में जो भी restrictions है ना वो public company को apply नहीं करेंगे. Simple. And has minimum paid up share capital. Again, there's nothing which is being prescribed. Okay, so a public company is a company which is not a private company. Minimum number of members here is 7. Maximum, there is no limit. And the restrictions which are applicable in case of a private company are not applicable in case of a public company. So that is what a public company means. अभी इसके अलावा there's other type of company that is a listed company. A listed company is basically a company which is listed on a recognized stock exchange. So company जो recognized stock exchange पे listed होती है उसको हम listed company बोलते हैं. Unlisted company जो company listed नहीं है, a company which is not a listed company is an unlisted company. अभी इसके अलावा the other types of companies, important types of companies which we have to study about is holding company and a subsidiary company. But we do not have so much of time in hand कि जो technical चीजें हैं वो मैं पूरी complete कर सकूं in the remaining 15 minutes.
So we'll start with holding company and subsidiary company tomorrow. And do not miss the lectures, because if you miss the lectures, there'll be a problem. You'll not be able to catch up later on if you're missing any lectures. So do not miss any classes. And also one more thing, you can also inform your friends about the course. They can enroll for the course even now. There's no problem with that. So I hope you've understood whatever we've discussed today. Any doubts? We still have 2 minutes to go through. Okay, clear. Sub clear hai. Fine. So let's end the session here today. And tomorrow we'll start with holding company, subsidiary company, and understand the remaining types and go through a few important definitions. And then we'll start with OPC and Section 8 company. और वो होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. सो डू नॉट मिस एनी लेक्चर्स. एवरीथिंग हियर इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस डेज क्लास. सो इफ यू मिस योर क्लास फॉर वन डे, तो अगले दिन का आपको समझ में नहीं आएगा. सो stay as present as possible, or rather I would just say do not miss any lectures. Okay, then let's end the session. Thank you.